Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students of 10th class, today we are going to move further as we will take the second lecture of the short story Ibli, written by Abdul Ghani Sheikh. In the previous lecture, we know that Ibli, who is an old woman of Ladakh, know that she is too simple, too innocent, and illiterate that she doesn't, that understand the difference between Srinagar and the other parts and the rest of the world. As far as Ibli is concerned, she believes that the only safest place for her and for her children is her own village. She has never been outside the village in her life, and for her, anybody who that goes outside the village, he is not secure, he is not safe. And in the meantime, when her granddaughter Roxana was sent to school in Srinagar to receive her education, her grandmother Ibli is too much concerned about Roxana, and she always, show her worries, show her concerns about her granddaughter before her children who are living with her. Sorry. And in the meantime, when her grandchildren, they assured her that there is no problem for Roxana. She's very much, she's in safe. She has gone to Srinagar to make her life, to make her future, that very bright. She hardly believes on them. And once an earthquake happened, that took place in Turkey, and Ibli is very much concerned about Roxana, who is staying at Srinagar. So all these things reflects the simplicity, the innocence, or we can say that the illiteracy of the old folk, that it has created a generation gap. As far as the present generation is concerned, they are very much that modernized, and for these old folks, it is very hard to understand these things, and these things seldom happen with everybody, especially when they were young, that kids or young children, they went outside the state or outside the village to receive education or for business purposes. Their father or grandmother, they are very much worried about them. They are never willing to send their grandchildren outside their village or outside their state or even outside their country, because they don't have that kind of exposure. They doesn't understand the competition era. We can say that the world where we are living nowadays, it is full of that competition. Everybody needs to work hard, and he has to manage to come outside his village or outside his home in order to make his or her future. So these are the things that the writer tries to convey us. Actually, the writer Abdul Ghani Sheikh tries to tell his readers about the generation gap, how these old folks, they are unable to understand the present scenario of the world, present situation, which demands people to come out of their respective homes or villages, that in search of jobs, to make their future. For in order to make their future, they have to leave their homes for some time. So, but these old people are not ready to compromise or to accept these things. So these are the things that are highlighted by writer in the short story. So let's proceed further. In the previous that lecture, we have actually that understand that how worried and concerned is Ibi about her granddaughter Roxana. Okay, so when that Dolma, who is also who also hails from Ladakh or Leh,
Ladakh actually, and in present time she is living in Delhi to receive education or some other purpose. When she comes to Ladakh for a few days, and first of all, Ibi doesn't recognize her. When she was told that she is a Dolma who had born in Ladakh and who once that was playing in the lap of Ibi, then she that got very much surprised. And as soon as she was told that she is a Dolma, she asked Dolma, "Have you met Roxana there?" It means that how much she is worried about Roxana. And when Dolma told her that she tried her best to meet her, but she could not, as she did not have the address uh, of the place or of the house where Roxana is living. So it that miffed Ibi very much. So what you have done, Ibi, was miffed. You were in Srinagar and could not find the house of my granddaughter. तो जब डोलमा ने इसे कहा कि उसने बहुत कोशिश की उसको उससे मिलने की, लेकिन वो इसे मिल नहीं पाई, तो इबी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई. मिफड़ मीनस परेशान होना. तो इसने इसे कहा कि आप श्रीनगर में थी और आप मेरी उस बच्ची पोती को नहीं वहाँ पे ढूंढा, आप उसे मिल ना पाई. इट इज़ अ बिग सिटी, माई सिस्टर इन लॉ इंटरप्टेड. तो इस दौरान मेरी एक भाभी ने बीच में टोका, उसने बीच में इंटरप्ट किया. उसने बोला कि अभी ये एक बहुत बड़ा शहर है. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 5 to 6 lakhs, 5-6 लाख की आबादी वहाँ है. एबली हाउ विल पीपल नो वेयर समवन लिव्स अनलेस दे हैव द कंप्लीट एड्रेस. तो अभी आप मुझे ये बता, लोगों को कैसे एक दूसरे के बारे में पता चले जब तक उनके पास पूरा एड्रेस या पूरा पता हो. Everyone says the same thing. Ibi's tone became serious and her eyes filled with tears. तो इबी ने कहा हर कोई मुझे यही बात कहता है. उसका वो थोड़ी सी उसका वो संजीदा हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे. आई रिमेंबर अनदर फनी एपिसोड रिगार्डिंग माई इबी. फिर राइटर कहता है एक और वाक़ा मैं आपको सुनाता हूँ अपनी इस दादी का. आई वॉज वेरी यंग दोज डेज, में बहुत बिल्कुल जवान था. माई अंकल समटाइम्स कम टू द विलेज टू हंट. मेरा एक चचा था, वो कभी कभार हमारे गाँव शिकार करने के लिए आता था. Once my uncle returned to the town but left his double-barreled gun behind. एक बार जब मेरा अंकल शिकार करके वापस अपने गांव लौटा, तो उसने अपना वो बंदूक, जो 2 नाली वाला बंदूक था, डबल बैरल है ना, तो उसने वहीं हमारे घर में ही छोड़ा. आगू had kept his gun in the kitchen where a big battalion of children of various relatives and in-laws often gathered. कागू जो था उसने वो बंदूक रसोई में रखी, जहाँ कई सारे रिश्तेदारों के, ससुरालों के, कई सारे बच्चों के एक बहुत बड़ी पलटन वहाँ पे जमा होती थी. इबी वॉज सो टेंस दैट शी कुड नॉट स्लीप फॉर 2 nights. इबी इतनी परेशान हो गई थी इस बंदूक की वजह से कि 2 रातों को तो बिल्कुल उसने वो नींद ही नहीं की. शी गॉट इन द किचन ऑल डे टू मेक श्योर नो चिल्ड्रन टच द गन. 2 दिन वो बिल्कुल वहाँ पे उसने वो देखभाल की कि बिल्कुल वहाँ उसने वो एक तरह से वो गौर किया, रखवाली की, पहरा दिया कि कोई भी बच्चा बंदूक को हाथ न लगाए. Convinced that as soon as it was touched, the bullets would explode instantly and everyone would die. उसको ये लग रहा था जो ही इस बंदूक को कोई हाथ लगाएगा तो उसमें से गोलियां निकलेगी, तो फिर हर कोई मर जाएगा. She would have locked the door if it had been any other room. But how could she close off the kitchen? अगर किचन में बंदूक गन न होती तो उसने उस दरवाजे को ताला लगाया होता, लेकिन किचन को ताला लगाना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ तो पूरा दिन वहाँ पे काम चलता रहता है, खाना पकाया जाता है वगैरह. When Abba and Agu returned to the village on the 3rd day and heard about the situation, they rolled on the floor with laughter. जब आबा और आगू तीसरे दिन घर पहुँचे तो उनने जब ये कहानी सुनी तो वो बिल्कुल फर्श पर गिर पड़े हंसते हंसते. I must confess that I take advantage of Ibi's simplicity. फिर राइटर ये कहता है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए, ये चीज़ मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट करनी चाहिए, मानना होगा कि मैं इबीली की सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता हूँ. द आर्मी ऑफ चिल्ड्रन ऑलवेज प्रेजेंट एट आवर होम ऑफन टीयर्स माई नोटबुक्स टू मेक काइट्स एंड बोट्स. जो कई सारे बच्चों की एक बहुत बड़ी फौज जो हमारे घर में हमेशा मौजूद रहती थी, वो अक्सर मेरी कापियाँ फाड़ देती थी और उससे वो फिर क्या बनाते थे, पतंगे बनाते थे और किश्तियाँ बनाते थे. तो वो बच्चे मेरी उन नोटबुक से, मेरी उन कापियों से ripping the sheets to shreds with scissors like fingers.
اور وہ کیا کرتے تھے اکثر وہ مطلب اپنی کینچی جیسی انگلیوں سے کاغذ کے صفحے کاٹتے اور ان کی مطلب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیتے تھے ہے نا. I put on a tearful face before Evie and tell her that these papers were official. میں نے ایک دن اپنا ایک ایسا موڈ بنایا سیریس موڈ اور اپنی دادی کو کہا کہ دادی دیکھیے یہ جو لڑکوں نے میرے کاغذ پھاڑ دیے ہیں یہ تو مطلب آفیشل تھے ان کا ایک ویلیو تھا ہے نا یہ کوئی عام کاغذ نہیں تھے ہے نا تو وہ بالکل مطلب دفتری کاغذ تھے وہ. تو جب میں نے اس کو یہ بتایا if they are torn, I will be penalized. These words worked like magic on her, and she preserves my papers with such intense care that no child would dare to even look at them. تو اس یہ الفاظ جو تھا اس پر جادو سے جیسا اثر انہوں نے کیا اور وہ پھر مطلب اتنے دھیان سے میرے کاغذات سنبھال کے رکھتی تھی کہ کوئی بچہ ان پر نظر ڈالنے کی بھی ہمت یا جرت نہیں کر سکتا تھا. No, not stopping at that, she saves all sorts of scraps and tidbits even when I am away, and when I go to the village, she presents them to me. Among them are papers from the grocer and snuff sellers for wrapping spices and snuff. اور یہ کاغذات جو تھے یہ اتنے مطلب چھوٹے چھوٹے وہ مطلب بے معنی کاغذوں کو بھی وہ اس طرح سے رکھتی تھی کہ جب میں گاؤں لوٹ کر آتا تھا تو وہ مجھے یہ کاغذات پیش کر دیتے جیسے وہ پنساری ہو نسوار بیچنے والوں کے لیے یہاں آئے ہوتے ہیں وہ مسالے وہ کہیں بھی مطلب گندے کاغذ سب کچھ ردی کاغذ بھی اس میں وہ رکھ دیتے. پھر all grandmothers, despite their varied backgrounds, are similar, particularly in their reaction to modern technology, like one of the grandmothers in our neighborhood. سبھی دادیاں اپنے الگ الگ پس منظر کے باوجود ایک جیسی ہوتی ہیں خاص طور پر جدید ٹیکنیک سے متعلق ان کا رد عمل یعنی آج کی ٹیکنالوجی تو اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں وہ بالکل اس سے وہ حیران ہو جاتے ہیں. When she refers to an aeroplane, she switches to horrified speech. The plane صاحب has arrived. جب کسی ہوائی جہاز کی بات کر رہی ہوتی ہے تو وہ احترام کے لہجے میں بات کرنے لگتی ہے جہاز صاحب آ گئے ہیں. The plane صاحب must be facing a lot of difficulty. جہاز صاحب کو آنے میں بہت دشواری پیش آئی. On hearing it makes noises. And today plane صاحب was very big. آج کا تو جہاز صاحب سے تو وہ بہت بڑا تھا. They say that when another Abby saw a plane for the first time, she went to greet the plane with bundles of grass in her basket. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک وہ دادی تھی وہاں جب اس نے پہلی بار جہاز دیکھا تھا تو وہ گھاس کی ایک ٹوکری لے کے اس کے سامنے سلام کرنے گئی تھی اور سوچا تھا کہ یہ بہت بھوکا ہوگا جہاز صاحب تو اس کے سامنے اس نے گھاس ڈالی تھی. There is another episode I sketched with our Abby. ہماری دادی کے متعلق ایک اور واقعہ بھی ہے. She and another Abby from our community. وہ اور ایک اور دادی ہمارے ہی محلے کی went to see a film. وہ فلم دیکھنے گئی. It was their first film. یہ ان کی ایک پہلی فلم تھی and will probably be their last one. اور تقریباً یہ ان کی زندگی کی آخری فلم بھی تھی. With their weak eyesight, the moving image on the screen held no more truth for them than a dream. ان کی تو آنکھوں کی روشنی بھی کافی دھیمی ہو چکی تھی بڑھاپے کی وجہ سے اور وہاں پہ جو وہ اسکرین پہ وہ امیج جو تھی نا وہ ادھر ادھر جو چلتی تھی تو ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی سپنا دیکھ رہے ہیں. They watched the film less and complained more of headaches and noise. انہوں نے فلم کم ہی دیکھی اور زیادہ تر انہوں نے کیا کیا کہ مطلب سر درد کے بارے میں انہوں نے زیادہ انہوں نے شکایت کی ہے نا زکام وغیرہ. تو ان چیزوں کو وہ بالکل مطلب انہوں نے فلم دیکھی لیکن سر درد اور مطلب جی مت لانے کی شکایت زیادہ کی ہے نا. تو پھر کیا ہوا کہ shortly with my elder sister's help, they understood that one of the important themes in the film was about a mother-in-law harassment of her daughter-in-law. پھر وہاں پہ جو تھی نا مطلب میری بڑی بہن تو انہوں نے ان کو سمجھا دیا کہ فلم کے اہم موضوعات میں سے ایک تھا کہ ساس کی طرف سے اپنی بہو کو پریشان کیا جانا. ایک ساس اپنی بہو کو پریشان کرتے ہیں اسی کے بارے میں یہ فلم تھی. ٹھیک ہے تو پھر
The next day saw both Ibis sitting on the rooftops of their house, spewing venom on the mothers-in-law of the world. फिर हमने क्या देखा, अगले दिन दोनों आबियाँ जो थी दादियाँ घरों की छतों पर बैठी हुई दिखाई दी, दुनिया भर की सासों पर जहर उगलती हुई। ये जो दुनिया भर की सासें हैं उनके खिलाफ वो मतलब बुरा भला कहती थी, मतलब क्या कहती थी कि वो ऐसे मतलब God save us from their worst incident. A girl from our neighborhood had been married into a household where she did not get along with her mother-in-law. फिर वो क्या कहते थे कि मतलब अल्लाह हमें उनके गुस्से से बचाए। इत्फाक से हमारे पड़ोसी एक लड़की एक ऐसे घर में ब्याई हुई थी जहाँ उसकी अपनी सास के साथ नहीं बनती थी। So from then on, whenever anyone mentioned the film, the two Abis would immediately start rebuking all mothers-in-law bitterly. इसके बाद जब भी कोई किसी फिल्म की बात करता तो दोनों आबियाँ उसी वक्त सभी सासों को बुरी तरह कोसने लगती थी। द नेबरिंग इबी इज़ ऑफ द सेम एज एज आवर इबी, जो हमसायों की वो दादी है वो भी हमारे दादी की एज की है। शी इज़ ए फ्रैटनिंग वुमन इंडीड, व्हेन शी इज़ अननॉयड शी रोर्स लाइक लायंस। वो बहुत ही है ना, वो एक डरवानी औरत है, जब उसे गुस्सा आता है तो एक शेरनी की मानत करेंगे लगती है। शी हैज़ हर ओन स्टाइल ऑफ रिलेइंग ऑल मैटर्स रैंजिंग, तो उसका जो है बिल्कुल मतलब उसका अपना ही एक बातों को नशर करने का, अपना ही बातों को एक्सप्रेस करने का अपना ही एक तरीका है। फ्रॉम पॉलिटिक्स टू डोमेस्टिक टेल, चाहे वो सियासी मसले हो से लेकर घरेलू कहानियों तक। A few months ago when I was learning on the staircase reading a book, I heard the two Ibis telling each other their stories. तो मैं आपको एक वो चीज़ बताऊं कि कुछ महीने जब मैं जीने पर झुके हुए खड़ी थी एक किताब पढ़ते हुए, तो मुझे दोनों अबियों की आवाज़ सुनाई दी। द सेम एवरीडे टॉक्स विथ विच माई ईयर्स वेर फैमिलियर, तो बिल्कुल वो तो मुझे दोनों अबियों की आवाज़ सुनाई दी, एक दूसरे को अपनी कहानियाँ सुनाते हुए, वही रोज़मर्रा की बातें जिनसे मेरे कान अच्छी तरह वाकिफ़ ही थे। Surely it is an omen signaling that the day of judgment is near. They must have been referring to a fatal accident or to the simultaneous death of two women, or demon, disgrace, enormous, all aimed at just testing a well-dressed woman. तो बिल्कुल ऐसे वो बातें करते थे ना कि मतलब ज़रूरी तौर पर ये एक बदशगुनी है जो उस बात की तरफ इशारा करती है कि क़यामत का दिन आने वाला है। वो ज़रूरी तौर पर किसी जानलेवा हादसे की बात या दो आदमी के एक साथ मारे जाने की बात कर रही होंगी, या वो इस तरह के अल्फाज बोला करती, चुड़ैल, लानत है, जाहिल आदमी। इन सभी अल्फाज के बोलने का मकसद किसी ऐसी औरत की बुराई करना होता था जिसने अच्छे ढंग के कपड़े पहने हुए है ना। तो टुडे यू नो दैट वी विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर। कल इंशाल्लाह इस कहानी का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।